Very good, Aditya. 1000. Okay. That means supply can be maximum equal to stock. All of you agree? Supply can be maximum equal to stock. Can I supply 200 shirts? Can I supply 200 shirts? Yes. But can I supply 1200 shirts? No. So supply can be either less than or equal to stock. Stock can be greater than supply. Stock can be greater than or equal to supply. Stock can be greater than or equal to supply. Okay. Now, the last point of distinction between them. Supply is a flow concept. Supply is a flow concept. Supply shows movement of goods. Movement of goods from producer to the consumer. It shows movement of the goods from the producer to the consumer. That is why it is called flow concept. It shows flow. It shows movement of goods from producer to consumer. Stock is a fund concept. Stock is considered as a fund concept. What does that mean? Stock is a fund concept. It means that stock is there in the warehouse itself. It does not show any movement of goods. वो एक ही जगह पे अटका हुआ है. It does not show any movement of goods and thus it is a fund concept. Whereas supply shows movement of goods from the producer to the consumer or from the warehouse to the market. It shows movement from warehouse to the market and therefore it is a flow concept. Is that distinction clear to all of you? लिख लिया था आपने? Okay. So now you should remember for perishable commodities. What are perishable commodities? Can you tell me? Please name some perishable commodities. Milk hai, vegetables hai, fruits hai, etc. They are all perishable commodities which do not have long life. Remember, for perishable commodities like fruits, vegetables, etc. For perishable commodities like fruits, vegetables, etc., supply will be always equal to stock. Stock and supply will be equal. At the same time, for durable goods or durable commodities, the commodities which have long life, are durable commodities. So example लेते हैं, we can see steel utensils or the plastic materials like chairs, tables, tubs, containers, dustbins, etc.
ये जो है दे आर ऑल ड्यूरेबल प्रोडक्ट, so for them stock will be greater than supply, or we can say supply will be less than or equal to stock. Supply will be less than or equal to stock. Any doubt into this part? Shall we go ahead? Determinants of supply, or people call it as factors affecting supply. Determinants of supply, or we also call it as factors affecting supply. The first factor that affects the supply is price of the commodity. Price of the commodity. ये उल्टा क्यों चल रहा है विकास सर? So price of commodity is the first factor which affects the supply. Price rises, supply also rises. Price falls, supply also falls. We can see that there exists a direct relationship. ये अभी कुछ लोग पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्यों बढ़ेगा? एक एग्जांपल लेते हैं. You know the equation C plus P is equal to S. What is that equation representing? C plus P is equal to S. What does that represent? Can I say cost price plus profit is equal to selling price? Can I say that? Okay. Abhi let us say cost price was ₹8. Profit was ₹2. Selling price was ₹10. अभी assume करेंगे हम cost remains the same. Cost remains the same, ₹8. Selling price बढ़ गया, ₹12 हो गया. Selling price बढ़ गया, तो what has happened to my profitability? What is now my profit? I earn profit of ₹4. Simple. मतलब जब कभी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बढ़ गया. ₹2 की जगह पे अपने को ₹4 प्रॉफिट हो गया. तो मैं तो एक नॉर्मल सेलर हूं, जिस चीज में मुझको प्रॉफिट ज्यादा होगा हम उस चीज को ज्यादा सेल करेंगे, तो सप्लाई बढ़ेगा. आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? लॉजिक समझ रहा है सबको कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्यों बढ़ेगा? समझा सबको लॉजिक? वैसे ही जब प्राइस कम होगा, सपोज प्राइस 10 से कम होके ₹9 हो गया, कॉस्ट सेम है तो मेरा प्रॉफिट ₹1 हो गया. प्राइस कम हो गया तो सेलर को मिलने वाला प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गया. देयरफॉर ही विल सप्लाई लेस. वो जिसमें उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है उसको सप्लाई कम करेगा, और जिसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है उसको सप्लाई बढ़ाएगा. आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? इज दैट फर्स्ट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट है तो पूछो. यस सर मत बोलना. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान.
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। The second factor which affects the supply is natural resources. See here, I take up availability of natural resource. अब जब कभी भी कुछ भी प्रोडक्शन करोगे तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, एंड मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम नेचर। तो जहां पे नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा रहेंगे, बेटर नेचुरल रिसोर्सेस, supply will be more, and ulta and reverse, vice versa. जहां पे नेचुरल रिसोर्सेस ज्यादा रहेंगे, सप्लाई विल बी मोर, एंड वाइस वर्सा। नेचुरल रिसोर्सेस कम तो रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो जाएगा, एंड रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। अभी रिसेंटली आपने देखा, देयर इज रिसेंटली, तो अगर हम बात करेंगे, देयर इज वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन US and China. US and China. And particularly ये जो extraordinary pandemic situation है, all the countries in the world are of a belief that इसमें China has played a major role to spread this disease throughout the world. तो आज आप ऑब्जर्व करना, बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट हैज एडवर्सली अफेक्टेड। इसके वजह से सप्लाई कम हो गया। अभी जैसे आप देखना, बार बार आजकल ये नेचुरल कैलामिटीज लाइक फायर एक्सेट्रा इज ऑल्सो टेकिंग अप। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर, जैसे हेवी thunderstorms and all those things are there, तो ऐसे ऑर्डिनरी सिचुएशंस रहेंगे तो ठीक है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में प्रोडक्शन कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड एंड द सप्लाई विल बी लेस, सप्लाई विल बी लेस। देन द फोर्थ फैक्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी C plus P is equal to S. 8 plus 2 is equal to 10. Let us say selling price remains the same, 10. Cost बढ़ गया 9, तो अपना प्रॉफिट कम हो गया, राइट? तो जब कभी भी कॉस्ट बढ़ेगा, रिमेंबर, जब कभी भी कॉस्ट बढ़ेगा उसमें से मिलने वाला अपना प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कम सप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई टेक एग्जांपल ऑफ पेन। आई टेक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, सप्लाई। Cost of production of a pen was 10 rupees. Selling price was 12 rupees. We were getting profit of rupees 2. अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, 10 से 11 बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, तो अपना प्रॉफिट कम हो गया। तो अपना सप्लाई भी क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सब प्रॉफिट कम हो गया, तो हम सप्लाई क्या करेंगे? बोलो, हम सप्लाई क्या करेंगे? कम कर देंगे। सिंपल है, प्रॉफिट कम मिल रहा है तो हम सप्लाई भी कम करेंगे। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया 9 रुपीस,
सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम 12, प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट, सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, अभी हमने एग्जांपल लिया है, ये एक फार्मर है, ये उसका फार्म है, खेती है, और ये मार्केट है। ध्यान से समझो इस एग्जांपल में। सपोज ये जो फार्मर है इसने 10 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया। कितना? 10 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया। अभी ये 10 बैग में से वो अगर 8 बैग्स खुद के लिए घर पे रख देगा तो मार्केट में सप्लाई कितना हो गया? 2 बैग्स। मार्केट में सप्लाई 2 बैग्स, तो यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन वाज मोर, देयरफॉर सप्लाई वाज लेस। समझ रहा है लॉजिक? अभी वापस से, सेल्फ कंजम्पशन वाज मोर, क्लियर बताया मैंने वहां पे, तो सप्लाई विल बी लेस। अभी वापस दूसरा एक एग्जांपल लेते। सपोज अभी उसने वापस वो 10 बैग्स प्रोड्यूस किया, उसमें से उसने सिर्फ 3 ही बैग रखा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो सप्लाई कितना बैग्स हो गया? 7। तो सेल्फ कंजम्पशन जब लेस था, सप्लाई वाज मोर। आर यू गेटिंग दैट? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरा प्रोडक्शन मैं करता हूं प्लास्टिक मटेरियल्स का। मेरे रॉ मटेरियल सेम है, मैं रॉ मटेरियल यूज करके प्लास्टिक का बकेट भी बनाता हूं एंड प्लास्टिक का चेयर भी बनाता हूं।